Welcome to Odisha Automation Solution. In previous class, we have discussed about the electro-hydraulic का फर्स्ट प्रोग्रामिंग प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं. अभी और एक प्रोग्रामिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. दिस इज द लैचिंग टाइप प्रोग्राम. ओके, सी द क्वेश्चन. Design a control circuit in electro-hydraulic such that when a push button is pressed and released, the cylinder goes forward and remains in forward condition. Means actuation condition में रहेगा. This is the latching condition. Okay. When another push button is pressed and released, the cylinder will come back. Means this is the stop switch like in electrical. Okay. Electrically we have to do the same control circuit, and hydraulic we have to choose for a double acting cylinder. Okay, पहले आप double acting cylinder, then 4/3 valve. Okay, 4/3 valve. 4/3 valve. देखिए ये लीवर एक्चुएटेड है. 4/3 valve लीवर एक्चुएटेड. इसको मैं सोलेनॉइड कर रहा हूँ. ओके, with my spring return. Okay, this is the solenoid SL. Naming it SL. Okay, do the necessary connections, place a pump unit and also tank. Okay, then go for electrical control circuit के लिए. Okay, first you have to take the 24-volt power supply, then 0 volt. Okay, then push buttons. This is a stop push button. Okay, means another, यहाँ पर लिखा another push button. Okay, this one I am naming as S2, means another push button, and this one is for S1. This is the first push button. This is the first push button. Then I'll choose and relay. Okay, relay for latching के लिए. Okay, then one relay, इसका मैं दे रहा हूँ K1. Okay, then one contact. This one is a K1 contact. K1 कुछ coil का contact है. Okay, do the connection. Okay, then place a valve. Okay, this is the SL. Okay, means क्यों यूज हुआ है. देखिए, जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा, throw like this, the supply will go and the coil will energize. That time my coil का जो कॉन्टैक्ट है K1 कॉन्टैक्ट, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा. मीन्स जब इसका कॉइल एक्चुएट हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, इसका जो NO कॉन्टैक्ट NC में कन्वर्ट हो जाएगा. थ्रू दिस पाथ द voltage will pass and the SL means the solenoid valve will actuate. Okay, like this will current will flow. Okay, voltage will flow and ground. Okay, this is the closed path. When I will release the S1, that time this coil will not get any power. Okay, for latching के लिए मैं इसका जो NO कॉन्टैक्ट में यूज किया हूँ. ओके, अभी देखिए ऑपरेशन करके आपको दिखाएंगे कैसे काम कर रहा है. देखिए, जैसे मैं पुश बटन को प्रेस किया हूँ. देखिए, अभी देखिए मेरा कॉइल भी एक्चुएट हुआ है, NO पॉइंट NC हो गया, SL भी अभी
एनसी कंडीशन में है, मीन्स एक्चुअल कंडीशन में है। ओके, जैसे मैं इसको रिलीज कर देता हूँ, देखिए थ्रो लाइक दिस माई करंट विल फ्लो। ओके, मीन्स वोल्टेज विल गेट द गेटिंग द वोल्टेज। ओके, फॉर लैचिंग के लिए मैं ये वाला कॉन्टैक्ट यूज किया हूँ, मीन्स इट विल गो फॉरवर्ड एंड रिमेन इन फॉरवर्ड कंडीशन में ही रहेगा। ओके, design a control circuit in electrohydraulics such that when a push button is pressed and released, a cylinder goes forward and remain in forward condition. This is my first condition. Okay, when another push button is pressed and released, the cylinder come back. Okay, this is the another push button. See, okay, again, again in the picture. Okay, release. Okay, and release. This is the operation of electrohydraulic. Okay, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में और एक प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे।